So the second race of the 2022 Formula One season has just finished. The Saudi Arabian Grand Prix was as exciting as it was last year, and we had unexpected results, both in qualifying as well as, kind of in the race as well. So, without any further delays, let's start this race discussion. I am Sid, Hey guys, I'm Raunaq. and this is the Men Inverse. So, Ronak, how did you like the race Yeah, the race was very interesting, to be honest. compared to Com- Bahrain? Compared to Bahrain, it was, I guess, season-defining race. It can be a season-defining race because we have, this race we saw a lot of developments Hmm. and what we might be expecting in future as well. एंड काफी लोगों के असली कार्ड्स भी सामने खुल के आए हैं. बिल्कुल, काफी Like, लोगों के असली कार्ड सच में सामने खुल के आए हैं. बहुत सी टीम अभी एकदम मतलब उनके बारे में मालूम पड़ चुका है कि वो भी कहाँ स्टैंड करती हैं. Yeah. हाउ मच दे आर स्ट्रगलिंग एंड आगे उन्हें कितनी मेहनत करनी है. तो जितने भी डाउट्स थे लोगों को वो थोड़े बहुत क्लियर हो रहे हैं. एंड विद दैट आई थिंक फर्स्ट ब्रेकिंग न्यूज विच हैपेंड इन क्वालिफाइंग सैटरडे, लुइस हैमिल्टन आउट इन Q1. हाँ, ये सबसे बहुत बड़ा सरप्राइज था Q1 का. और मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि हैमिल्टन Q1 में ही नॉकआउट हो जाएंगे. आई मीन अंडरस्टैंडेबल तब होता इफ जॉर्ज रसल भी आसपास वहीं कहीं होते, बट जॉर्ज रसल वाज P5 आई थिंक दैट टाइम. हाँ, जॉर्ज इजीली क्वालिफाइड Q1. हाँ, easily qualified Q1 हाँ, with a उनको huge इतनी दिक्कत margin. नहीं आई थी Q1 क्वालिफाई करने में जितनी हैमिल्टन को आ रही थी. लगभग कर गए थे बट फिर Lance Stroll ने उनको ढकेल दिया Q1 में. knocked out for the first time since 2017 Brazilian Grand Prix. So, well, lot of things happened, and Hamilton out in Q1 was a big shocker, along with a huge crash for Mick Schumacher. Q2 में I mean, he was giving it everything. अगर वो लैप खराब नहीं होता, if he would not have crashed, guaranteed Mick would have been in Q3. बिल्कुल, मिक का परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव किया पिछले रेस के मुकाबले. और ये एक्सीडेंट एक्चुअली में बहुत ही मतलब भयंकर, थोड़ा सा इंटेंस एक्सीडेंट था ये. Yeah, because गाड़ी दो टुकड़ों में हो गई. एंड वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था एंड काफी देर तक हिला नहीं. काफी देर तक ही वॉज मूविंग वेरी स्लोली एंड ही वॉज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार. तो मेडिकल कार आ गया था एंड इवेंचुअली ही हैड टू बी एयरलिफ्टेड टू द हॉस्पिटल फॉर प्रिलिमिनरी चेक्स एंड प्रिकॉशनरी चेक्स बेसिकली. तो बट या इम्पैक्ट उस क्रैश का इतना तेज था कि 40 Gs. बिल्कुल, ये किसी भी आम इंसान के लिए बर्दाश्त करने के बस के बाहर है. नहीं. सो फिजिकल इंजरीज मतलब एक्सटर्नल कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उसको हॉस्पिटल लेके गए थे इन केस अगर कोई हेयर लाइन फ्रैक्चर या इंटरनल कोई इंजरीज ना हुई हो तो. बट लकीली मिक वाज फाइन एंड ही कुडंट रेस ऑब्वियसली बिकॉज गाड़ी नहीं थी उनके पास एंड इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू रीबिल्ड द एंटायर कार इन द नाइट. So for safety reasons, for health and safety reasons, Mick did not race in Jeddah. But well, ये तो Q2 की disappointment हो गई. Luckily, Q3 में we had a new pole sitter. बिल्कुल, Nobody expected it. Absolutely, मतलब किसी फरारी की पेस देखने के बाद तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं होता. बट चेको ने जो कमाल किया है, जो जादू किया है यार, बिकॉज फोल लैप में. बिकॉज पहले क्या हुआ, साइंस गया, ही वॉज प्रोविजनल पोल, देन Leclerc वेंट, ही केम ऑन टू प्रोविजनल पोल. उसके बाद ऑल आईज वर टेक्निकली ऑन मैक्स वर्स्टैपन. एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि मैक्स आएगा एंड मैक्स पोल ले जाएगा, बट मैक्स से पहले चेको था एंड चेको जस्ट स्मैश्ड इट. चेको ऑन पोल फॉर द फर्स्ट टाइम.
after 215 race starts. This is the longest gap for the first pole. And Checo has now two records to his name. Longest gap from his race debut for the first win, 190 races, and longest gap, 215 races from debut for his first pole. So, well, Checo Perez, really good. Amazing job. And वेल डिजर्व पोल था उनका, उन्होंने अपना 100% से भी ज्यादा दिया है मेरे ख्याल से, करेक्ट क्योंकि इतना आसान नहीं था फरारी का स्ट्रेंथ देखने के बाद. करेक्ट. एंड इनफैक्ट इवन चेको ने बोला था दैट if he does it 10 times more or even 100 times more, he will not be able to beat this time. So he said that I gave it 100%, and he's very confident that if he can get pole in Saudi, he can get pole at any racetrack in the world. Because Saudi is very challenging, बहुत dangerous है, बहुत fast है, 27 corners. I mean, if you watch an onboard of the Saudi Grand Prix, तुम्हें थोड़ा सा ना ऐसे घबराहट होने लगेगी, because the walls are so close, and ऐसा लगेगा अभी लगी दीवार में, और गाड़ी एकदम चिपक के चलती है. And my goodness, इतनी Red Bull, I think top speed was 333 kilometers an hour. That was the top speed speed trap में जो पकड़ा था Red Bull को. So yeah, so that was Checo's pole. We were all expecting that probably Checo will win the race as well, because start from pole, lead, gap बना लोगे आराम से, and फिर ओवरटेक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. चेको की रेस अच्छी जा रही थी. चेको की रेस काफी अच्छी जा रही थी. But before the race started actually, एक प्रॉब्लम हो गई. Not with Checo, thankfully. Tsunoda was on his way. Yuki Tsunoda was on his way to the grid, and engine just died. He had to retire from the race. उनके हाथ में फिर बिल्कुल हाथ में था ही नहीं. So he had to retire from the race. Did not start the race only. So we had two drivers who did not start the race. Mick Schumacher because of the crash which he had, and Yuki Tsunoda because of the engine giving away. So yeah, Checo ने अच्छी रेस स्टार्ट करी, अच्छा लीड भी बना लिया. He was very comfortable cruising in front, and then there was a radio call from Ferrari to Charles to ask him to box, but Charles did not box. Checo did box, and Checo pit करने के बाद जब वो pit के बाहर आया, he was I think running P3 if I'm not wrong, and just after that Nicholas Latifi crashed into the wall, brought out the safety car, and सब कुछ पलट गया. चेको की रेस वहां पे पूरी खत्म हो गई, and Charles came into the pit. Charles inherited the lead, and Checo was relegated to P4. तो and वो वहीं पे रहे पूरे रेस, P4 में ही फिनिश किया. Sad for Checo, but great effort. Formula One is a lot of luck is there involved in Formula One. तो tricky हो जाता है कभी कभी. It's heartbreaking, but yeah, at least Max got the win. That is very important for Red Bull. Yeah, and surprisingly, apart from Latifi का accident, it was a very clean race start. मतलब हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट कुछ ना कुछ क्रैश होगा, कुछ ना कुछ इंसिडेंट होगा या कोई टच होगा, बट रेस स्टार्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ. दैट्स वेरी गुड, एंड इट वाज अ रिलेटिवली क्लीन गेट अवे एज वेल. बट द टू Alpines वर फाइटिंग इट आउट, Alonso and Ocon, लैप आफ्टर लैप. क्या मतलब अमेजिंग बैटल्स हुए इन दोनों के. सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों ड्राइवर एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा. ऐसा कुछ भी नहीं कि दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही हो, बट जो रेस इन्होंने दी एल्पिन के दो ड्राइवर्स ने, फर्नांडो अलोंसो और ओकॉन ने, बहुत ही अमेजिंग था देखने को. माय गुडनेस, अमेजिंग. ओवरऑल ये रेस देख के मजा आया, और आगे भी जब हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि ये रेस क्यों इतनी अच्छी लगी हम लोग को. सो एक्चुअली एल्पिन टीम में पहले बात हुई थी रेस स्टार्ट होने से, एंड ऑकॉन ने भी ये कंफर्म किया, अलोंसो ने भी बोला था ये, दैट दे विल बी अलाउड टू रेस.
दे आर अलाउड टू रेस, ऐसा कोई टीम ऑर्डर्स नहीं है. बट यस, जब उनकी रेसिंग बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही थी एंड उसकी वजह से बिकॉज ऑफ देयर रेसिंग बॉटास पास आ रहा था, तो उसकी वजह से टीम से ऑर्डर्स आए ऑकॉन को दैट यू होल्ड पोजीशन सो दैट बॉटास डजंट go in front of you. Unfortunately, Bottas did overtake Ocon, and eventually Alonso के साथ भी थोड़ा bad luck हो गया towards the later half of the race. But yeah, at the end of the day, uh, Alpine did have a good race, minus the DNF from Alonso. So overall a good day. They could have had a better day. They could have, yeah. अगर But Alpine के लिए overall ये दिन अच्छा था. गुड रेसिंग एंड इससे बस एक ही चीज कंफर्म हो जाती है दैट 2022 रेगुलेशंस जो हैं, पहले ऑन पेपर हमें लग रहा था दैट यार इट विल बी अ टाइट सीजन, अच्छा होगा, क्लोजर रेसिंग. बट ऑन पेपर जो होता है एंड इन रियलिटी जो होता है, बहुत अलग होती हैं ये चीजें. सरप्राइजिंगली जो प्रेडिक्ट किया था वो हो रही हैं चीजें. So that is very nice. So we are having a lot of close racing, wheel to wheel action. Cars are able to follow each other even closer. So it is very exciting. And Ferrari power units are on the top. I mean, क्या हो क्या रहा है? I mean, even Lewis himself said that he is unable to keep up with the Haas. And a Haas overtook Lewis Hamilton on pure pace. ऐसा नहीं था that Lewis was on old tires or something of that sort. He had just pitted fresh mediums. Haas had also just pitted fresh tires. And the Haas just overtook Hamilton on the main straight with DRS, pure pace. And Hamilton was like, I can't keep up, man. So that just goes to show that Mercedes are really struggling. Mercedes power units are struggling because bottom 5, bottom 6 में सारे Mercedes ही हैं. So ये पूरा टर्न अराउंड हमने पहले भी रेस में देखा था कि Mercedes की पावर यूनिट जितने भी गाड़ी हैं जो Mercedes पावर यूनिट से पावर्ड हैं वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं. Ferrari power unit की सारी गाड़ियाँ strong है, बहुत strong, including the Alphas and the Haases. It's just bad luck कि काफी बार गाड़ी रिटायर हो रही है या कुछ issues हो रहे हैं या crash हो जाता है. Luckily, pure pace is there. The Ferrari power unit is really strong, right up there with the Red Bull power unit. हाँ बिल्कुल. तो coming to मतलब लैप 16 के बाद लेटिफी की क्रैश के बाद एक बार जब सारा ग्रिड रीशफल हो गया था, तो उसके बाद ना थोड़ा सा बोरिंग होने लग गया था रेस. एक सर्टेन पॉइंट तक था. हाँ मतलब इवन मैं अपने जो F1 ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उस पे भी हम डिस्कशन चल रही थी हमारी एंड उस पे भी लोग कह रहे थे दैट यार इट्स गेटिंग अ बिट बोरिंग नाउ, व्हाट्स हैपनिंग. इट गॉट स्लाइटली ऑनेस्टली मेरे को रेस बोरिंग तो नहीं लगी because it is मेरे ख्याल से it is all about interest, like how much interest you're taking in the race. The point is we are closely monitoring, I guess, each and every lap because we want to see what new regulation brings on the table. And ये first 2 races and I guess few more races अभी बचे हैं. So we will be keeping a close eye on maybe each and every single lap, and we want to know more, extract more information from whatever we can see, what all incident happened on the track. So it's not like the race was getting boring or anything. I guess the race was very spectacular. The track was fast, amazing, and there were also very close battles. And अब जिनको बोरिंग लग रही थी उनको बोरिंग ज्यादा देर के लिए नहीं लगी बिकॉज लैप 36 पे गाड़ियां रिटायर होनी स्टार्ट हो गई. Yes, you don't expect ना कि रेस में एकदम से कुछ धमाल हो जाएगा हर लैप पे. You cannot expect that. ठीक है, there will be few laps जहाँ पे चीजें स्टेडी चल रही होगी. Exactly. So as मैं बता रहा था कि Alonso retired lap 36, Ricardo retired, Bottas retired, all having similar issues, engine issues, overheating issues, and surprisingly all 3 different power units: Renault power unit, Mercedes power unit, Ferrari power unit. So all 3 power units had an issue of overheating. तीनों रिटायर हो गए एंड उसकी वजह से वर्चुअल सेफ्टी कार बाहर आई एंड थिंग्स गॉट अ बिट इंटरेस्टिंग बिकॉज Ricardo, where he stopped right at the entry of the pit lane.
So there was slight confusion. Is the pit lane entry open? Is it not open? Is it closed? If I go into the pit lane, will I get a penalty? That is why Hamilton did not come into the pits. But just as soon as he crossed the pit line, Bono came on the radio and is like, box, box. And Hamilton was like, you're too late, man. And I think the reason Hamilton did not come into the pit was 2020 में Monza में he got a penalty because the pit lane entry was closed. Kevin Magnussen की गाड़ी खराब हो गई थी pit lane entry पे, and the pit lane entry was closed. Hamilton went into the pit. He changed his tires. Later on, he had to get a 10-second penalty, and he definitely did not want that because Hamilton was already in P6 at that point of time. So बहुत lucky था, but अब इसमें केविन मैग्नुसन एंड निको हल्केनबर्ग का लक बहुत ज्यादा अच्छा है. बोथ ऑफ देम केम इनटू द पिट, एंड जैसे ही निको एंटर किया पिट को, पिट लेन एंट्री वाज क्लोज्ड. बोथ ऑफ देम डिड नॉट गेट अ पेनल्टी. They got to change their tires. They got benefit. Hamilton came into the pits after the pit lane entry was allowed and it was open. And well, by that time P6 से P12 तक drop कर चुके थे Lewis. And it all started to fall apart. So Lewis clearly struggle कर रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा. हाँ. तो पता नहीं अभी क्या हो रहा है, because Mercedes power units are actually really struggling a lot. But I have faith in Mercedes. Well, I am not a Mercedes fan or even a Hamilton fan, to be very honest. But I have that belief that Mercedes and Lewis both are a very dominant pairing and बहुत strong pairing है. And वापस आएंगे. They are determined and Mercedes and Lewis, I guess they are the strongest pairing ever in Formula One history. I think नहीं, I think it was Michael and Ferrari. हो सकते हैं. Michael But built that that domination Mercedes ने अपने इस hybrid era में दिखाया है. हाँ, no doubt. That is also worthy of No doubt. being considered as like one of the strongest. Yeah. pairing. So Mercedes has a lot to do right now. So yeah, बहुत हो गया. Mercedes. And Let's skip to the good part. Yeah. Can we skip to the good part? Yeah. Sorry. Anyway, so yeah, skipping to the good part, we had a battle on our hands with Max and Charles. They were racing at the front, and amazing racecraft. Amazing. Max overtaking Charles. Charles repeating what he did in Bahrain. And फिर Max and Charles दोनों ने सीखा कि because Saudi में क्या है that the DRS detection zone. दोनों there are two back-to-back DRS zones. So अगर आप फर्स्ट वाले में ओवरटेक कर लोगे तो सेकंड वाले में जिसको आपने ओवरटेक किया उसको DRS मिल जाएगा, एंड मेन स्ट्रेट पे ही कैन ओवरटेक यू. सो मैक्स लर्न फ्रॉम दैट. मैक्स स्विच्ड ऑफ हिज DRS फर्स्ट DRS जोन पे, एंड टुवर्ड्स द लास्ट DRS जोन व्हेन दे वर एंटरिंग, मैक्स एंड चार्ल्स बोथ ब्रेक्ड एट द सेम टाइम सो दैट किसी को DRS ना मिले. बट चार्ल्स jumped across Max, जल्दी से निकल गया आगे. Max realized that अगर मैं इसको फर्स्ट DRS जोन में ओवरटेक करूंगा तो ये मेरे को सेकंड में ले लेगा, तो मैं रुकूंगा. आई विल नॉट ओवरटेक हिम. ये गलती एक बार मैक्स कर चुका था. ये गलती मैक्स कर चुका था, बहरेन में भी कर चुका था. चार्ल्स की उसको टेक्निक समझ आ रही है, चार्ल्स कैसे रेस कर रहा है. तो थर्ड टाइम अराउंड मैक्स हैड दैट पेशेंस इन हिम. मैक्स waited, and he was just behind Charles, and just when they were at the DRS detection zone, he got the DRS main straight, overtook Charles and took the lead of the main race. straight पे DRS मिल जाना is like you are getting a like
बहुत बड़ा पावर बूस्ट मिल गया आपकी गाड़ी को एंड बहुत सर्टेन है कि आप 16 kilometers an hour पर आवर का और वो additional. लंबा स्ट्रेट है काफी. So yeah, so Max took the lead and well, he stayed in the lead, and it was amazing wheel to wheel racing between these two. And मेरे को ऐसा लग रहा है कि if this is the type of racing that we are going to witness this year, bring it on. I mean, why not? Why not? हर एक रेस इंटरेस्टिंग होएगी इससे तो. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दोज बोरिंग ट्रैक्स टू कम. स्पेन, then Monaco. Monaco, yeah. ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर दीज ट्रैक्स टू कम कि क्या होने वाला है. Let's not say boring. These tracks are boring. Not boring, but yeah. We might offend people. नहीं, agreed, but yeah. इसमें एक्शन नहीं होता इतना. हाँ. मतलब ओल्ड जनरेशन ऑफ कार्स में इतना एक्शन नहीं था. मे बी न्यू जनरेशन ऑफ कार्स में एक्शन हो इतना. हो सकता है. And we are going to Australia next to next week, which is great because after 2 years we'll be racing in Australia. So that I is am too very excited about racing. And track bhi update hua. It has been made a bit faster. So who knows what might happen. Australia is going to be interesting. Very interesting. Very interesting. So yeah, at the end of the race, we had Max winning, Charles P2 and Sainz P3, and there was a lot of respect between the drivers. Both of them were waving at each other, hugging each other out after the race, and immense show of respect between जैसे both क्रिकेट में teams. बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्समैनशिप हाँ, जिसकी बात होती है तो Gentleman. ये हाँ क्रिकेट इज जेंटलमैन, दैट्स फाइन, बट एक स्पोर्ट्समैनशिप होता है कि आपने ओपोनेंट को रिस्पेक्ट करना, उसकी काबिलियत को रिस्पेक्ट करना. तो ये सब देखने को मिला हमको इस रेस में. ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई इस रेस में बिकॉज केवल मैक्स और चार्ल्स ने ही नहीं बल्कि बाकी के ड्राइवर्स ने भी एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट किया है. लैंडो ने ओकॉन को और ओकॉन और Alonso ने एक दूसरे को. That was also very much respected between the drivers. Yeah, agreed. So, I think the only contact which was there was between Stroll and Albon. And Albon DNF हो गया था. So apart from that, I don't think there was contact between drivers. So that was a good thing. Very very good, cleanish race. We didn't get a red flag. Yeah, so 0 red flags at Saudi. Red flag देखने को बिल्कुल नहीं मिला, which was very good. Last year there were 3 red flags, I think 3 restarts थे. And I was like, ये क्या हो रहा है, मतलब Saudi is dangerous. थोड़ा सा ट्रैक में चेंजेस किए थे उन्होंने, but yeah, ठीक है, good that it was a very clean and nice lovely race. So with that we go to Australia and let's see what happens in Australia. It will be fun. Revised track is there. So what are your predictions for Australia? I mean, it's a new track, I know, but बिल्कुल एकदम ही न्यू ट्रैक है अभी तो ऑस्ट्रेलिया, और प्रेडिक्शन भी करना वहाँ पे मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है. बट अगर देखा जाए अभी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि एक स्पीड ट्रैक है, तो मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ रेडबुल को अच्छा परफॉर्मेंस देने का. एंड दैट इज वाई in quali I'm expecting Max to get the pole, P1, Checo P2 and Leclerc P3. Okay. And for the race मेरे predictions हैं same, almost similar grounds पे, maybe Max on the podium P1 and along with Checo and Leclerc. So Red Bull 1-2. Red Bull 1-2. Definitely. I'm expecting Red Bull 1-2 this time. Okay. I love Max, but I think my predictions would be Max for pole, Checo P2 and Sainz P3, and Sainz for the win, Max P2 and Checo P3. That's my prediction. I really want Sainz to win. Yeah. I really want Sainz. You never know. Sainz is a good driver. बहुत बढ़िया ड्राइवर है. एंड मैं ये नहीं कह रहा चार्ल्स अच्छा है या फिर साइंस बेकार है, इस टाइप से कुछ भी नहीं है. बट इट्स जस्ट आवर वाइल्ड प्रेडिक्शन फॉर द ऑस्ट्रेलियन जीपी. Yeah, and that's all for this week. Thank you guys for listening. Please do like, subscribe and comment if you like this kind of content, and
do share it with your friends. So that was me, Sid. Bye, guys. This is Raunaq signing off. And thanks, guys. This is the Men in Verse.